Assalamu alaikum. My name is Gufran Ahmed Naim, final year student at the Department of Earth and Environmental Sciences under the Bahria School of Maritime and Applied Sciences. I am pleased to be today's moderator for our webinar session, which is related to our field of remote sensing and GIS. Today, here with me, I have fellow student Miss Eliza Suhail, final year student. I have Mr. Tawheed, who is expert in GIS and remote sensing and works at the urban planner of IBA. Next, we have our student support center, Mr. Shiroz Virani, who is manager assistant at SSC. And next, we have our master student, also at the Department of Earth and Environmental Sciences, Mr. Khizr Askari. So let's start off. Mr. Tawheed, could you define what GIS and remote sensing is? Basically, GIS and remote sensing could be considered as a tool for the mapping as well as to support the research methodology and different kind of researches. In GIS, the full form of GIS is Geographic Information System, and RS is remote sensing. First, I want to talk about the GIS. In GIS, we are dealing with different kind of data set. We are creating the geospatial data as well as which hold pertinent kind of geographical location, and that data set could be recreate, edit, manipulate, and certain kind of of the different kind of GIS software, and those data could be culminate uh, final research mode as well as different mode of mapping. And similarly, remote sensing, which is another advanced kind of tool which support the mapping and research, in which if we want to get an idea or to calculate the extent of flood. So in case of flood, likewise, as we have seen the flood over here 2022 in the Sindh and Balochistan, no one can jump into the field. So how can we get the information and data without jumping to the field remotely? So remote sensing help us to get the data by the satellite or some extent the drone technology and some other airborne technologies by which we can get the data and analyze the data on the basis of that analysis we can get some sort of results, likewise damage by the flood, extent of the flood. So this is the whole introduction of the GIS and remote sensing. So, is there any scope of it in Pakistan? Yes, because in the past recent days we have seen that क्योंकि अब climate change का बहुत तेजी से हम सुनते हुए आ रहे हैं. इससे पहले we have learned and heard a lot about the environment, but no one was taking it a serious threat for the humanity. But now the climate change, जब से climate change की debate आई है, तो अब हम देख रहे हैं कि लोगों की इस तरफ जो है वो इंटेंशन बढ़ गई, लोगों में थोड़ा सा संजीदगी से इस चीज को ले रहे हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हैजर्ड जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. उसमें जो है हो सकता है वो हीट वेव को देख रहे हो सकता है वो जो है ये फ्लडिंग को देख रहे हो सकता है ड्राउट कंडीशन को देख रहे हो, या जो है आपका फ्लडिंग के डिफरेंट पैटर्न हो या प्रेसिपिटेशन हो, कुछ भी हो सकता है. जब इन तमाम चीजों को हम देखते हैं तो इसको देखने के लिए जो है द बेस्ट पॉसिबल वे to dive into that data, remote sensing and GIS both are good softwares. अच्छा, उसमें फिर ये है कि अभी हम IPCC की जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बहुत फोकस किया कि एशियन कंट्रीज में जो है वो GIS एंड रिमोट सेंसिंग को जो है प्रमोट किया जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो यूरोप, अमेरिका एंड ऑल ओवर द डेवलप्ड वर्ल्ड ऑल आर गुड इन GIS एंड रिमोट सेंसिंग, लेकिन हम थोड़ा पीछे हैं उसमें. अच्छा, अब हुआ ये है कि अब तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट काम करता है, जो इंस्टीट्यूशन है, दे आर क्रिएटिंग वन GIS डिपार्टमेंट. इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूं कि के इलेक्ट्रिक में जो है उनका अपना GIS डिपार्टमेंट मौजूद है, SSDC का अपना GIS डिपार्टमेंट मौजूद है, इवन जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है उनका अपना GIS डिपार्टमेंट मौजूद है. अच्छा, इसके अलावा क्योंकि मेरा जो है कुछ काम करने का ताल्लुक रहा वर्ल्ड बैंक के साथ, दीगर इदारों के साथ, तो वर्ल्ड बैंक के इस वक्त कराची में जो है वो 6 प्रोजेक्ट हैं और मोर देन 11 प्रोजेक्ट हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. तो अब होता क्या है कि वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये तमाम जब अपने प्रोजेक्ट के साथ आते हैं
तो ये एक कंपोनेंट इसमें जीआईएस का होता है, और जीआईएस की तकरीबन विद इन वन प्रोजेक्ट 3 to 4 जॉब्स इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे वो आपका जो है वो नेशनल स्केल का हो, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑल हैव जीआईएस डिपार्टमेंट नाउ। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये समझ आ रही है, तो उसके साथ साथ जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जो है वो बहुत तेजी से फील्ड आगे बढ़ रही है। और इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव कि बहरिया यूनिवर्सिटी ने इस पे बाकायदा 4 साल का एक प्रोग्राम शुरू किया, जो कि बीएस लेवल का प्रोग्राम है, और उसमें जहां तक मैंने देखा कि इंटरमीडिएट स्केल के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हो, वो इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद जीआईएस और मैपिंग को जो है वो एज अ करियर जो है वो लेकर चल सकते हैं। अच्छा, फिर हम आगे बात करते हैं मिस्टर शिरोज। अब ये बताएं कि एसएससी है क्या एट बहरिया यूनिवर्सिटी? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख दुरानी है। मैं एज एसएससी एज स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर के आते में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बेसिकली स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं एक बात आपसे थोड़ा करना चाहूँगा, जिसमें समझ पाएंगे कि ये डिपार्टमेंट हमने हमेशा बात सुनी होगी, तालीम और तरबियत एक साथ साथ चलती है। तो सर ने जिसने बात करी एकेडमिक्स के हवाले से, तालीम ये हम इस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा तरबियत भी एक बड़ा एलिमेंट होता है। इसमें स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर का डिपार्टमेंट इनेबल होता है, विच इज नॉन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, तरबियत के अंदर आपके हर मामूल से जुड़े हुए, यानी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ को इन्हांस करता है, कैंपस लाइफ एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है। उसके अलावा आप जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते हैं, तो दाखिल होने से लेकर आपके बाहर जाने तक आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी तकलीफ, कोई भी सपोर्ट की जरूरत है, तो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर आपको प्रोवाइड करता है। उसमें मल्टीपल डोमेन्स आते हैं, जिसमें हमारे वन विंडो सॉल्यूशन आता है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज जो है अपनी तकलीफ को लेकर दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें आप अपनी सारी एप्लीकेशंस, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा दैट सेकंड पार्ट इज द कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम। कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम क्या है कि वो आपको 40 घंटे पूरे करने हैं। यू हैव टू कंप्लीट द 40 क्रेडिट आवर्स टू गेट द डिग्री डन, otherwise you will not get the degree. It means you have to support initiative, work in an initiative that supports the community, because we don't want just you to become a academic learner, we want you to be a good citizen as well. Then iske baad we have placement department, which is enable the opportunities for students regarding your internships, regarding your jobs, regarding the industrial visits, regarding corporate license. They coordinate closely to make a bridge between academic and corporate world. And इसके बाद हमारा एक alumni association है, alumni department है, which connects you even after you are graduating hours and years. That what you are doing, how we can enable the opportunity for students regarding and making a bridge in with the alumni as well, because this is the best resource which we can utilize to connect with the corporate, because they are the ambassadors, they are going to promote you, they are going to represent you in the future. And lastly, we have clubs, which is the essential part to make your university and campus life even fruitful, because we want you to, when you get done your degree after 4 years of long period of time, and when you just turn back to see what are the memories you have made, तो उसमें जो है स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर एक बड़ा रोल प्ले अदा करता है। आपको एक क्लब, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो आपका कैंपस लाइफ बहुत अच्छा लगता है, आपको मेमोरीज बनाने के लिए मदद करता है, थोड़ी ग्रुपिंग्स बनाने में मदद करता है, लेकिन उसकी लर्निंग एक्सपेक्ट भी है। We have multiple clubs. We have event management club. If you want to found out music, you can have music club. If you are good in drama, तुम्हें ड्रामा करने का शौक है, तुम एक्ट करना चाहते हो, you have a dramatics club. You can write, you can play, you can act. उसके बाद हमारा जो है म्यूजिक क्लब है, ड्रामेटिक्स क्लब है, उसके अलावा डिबेटिंग क्लब है। डिबेटिंग क्लब में यू कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें एनुअल भी आता है, आपकी डेक्लेमेशंस भी आती हैं, तो आप यूनिवर्सिटी क्लैश करती हैं, उसमें आप क्या टाकरा में जा सकते हैं, उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे आपका हिस्सा होती है। उसमें आप टीम बिल्डिंग सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, आप अपने साथ जो है लीडरशिप स्किल्स सीखते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट में क्या मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हैं। There are so many things that आप करते करते सीख पाते हो, because this is the best time when you jumble up with students, with your seniors, with your juniors together, and you can portray this thing in your CV, because the only thing you can portray in your CV was the
internship, right? But now we are giving you an opportunity because you have multiple things to give. This is the small introduction of Student Support Center I have. Oh, thank you so much. Mr. Khizr, as someone who has just recently finished his master's, how was your experience at Bahria University? And if you could talk about your research a little bit related to RS and GIS, so that would be good. Assalamu alaikum. My name is Syed Faizaskari. Currently, I'm working as a researcher at National Institute of Maritime Affairs. इसकी अगर एक जर्नी एक मेरा एक बहुत ही मेरे करियर के हिसाब से मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से इस मास्टर्स ने मुझे बड़ा इन्हांस किया. अब जिस तरह सर तौहीद हैं ये भी मेरे उस्ताद रह चुके हैं इसी उसमें मास्टर्स के पूरे सफर में. तो इन्होंने मुझे जिस तरह GIS का तो इनफैक्ट जिस तरह सर ने बताया कि GIS मल्टीपल डोमेन्स में लग जाता है, किसी भी डोमेन में लग सकता है, इवन बैंकिंग में लग सकता है, हॉस्पिटल्स में लग सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पहले इसको इनिशियली ऐसे देखा जाता था कि सिर्फ ज्योग्राफिकली और नेचुरली इसको इस्तेमाल किया जाता है, बट इसको कॉर्पोरेट लेवल पे भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है. तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर भी GIS का एक बहुत बड़ा रोल है. तो उसी को मैंने यूटिलाइज करते हुए मैंने अपने मास्टर का थीसिस मैंने किया जिसमें मैंने मैंग्रोव्स की डिप्लीशन पे बात की. अब मैंग्रोव्स आपके पास इंडस डेल्टा में आ जाते हैं और एक लियारी रिवर के पास आ जाते हैं, मेनली सिंध के अंदर कहीं पे. मगर इसके अगर आप GIS के हिसाब से इसकी मैंने जो मॉनिटरिंग की वगैरह तो उसने बड़े रिजल्ट शो किए जो कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपके काम आ सकते हैं. कि आप देख सकते हैं क्या कि मैंग्रोव्स के कवर जो था सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू वो किस तरीके से कम हो गए या ज़्यादा हो गए. अब जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर आप अक्टूबर की अगर आप रिपोर्ट देखें, एक इंडस डेल्टा में आपके मैंग्रोव्स बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़े, ये एक अच्छी खबर है. बट इसके अलॉन्ग साइड लियारी रिवर पे उन्होंने बताया कि वो कम हुए हैं. एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं, बट द थिंग इज कि तकरीबन 20 से 30 एकड़ के करीब लियारी रिवर पे कम है. और इसी पे मैंने स्टडी की और एग्जैक्टली यही चीज़ आई है. और इसी जर्नी के दौरान मैं अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था, मेरे इसी GIS की बेसिस पे मुझे हायर भी कर लिया गया था एज अ रिसर्चर, क्योंकि फर्दर जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पर GIS रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आए हुए थे तो उनको वो करने थे. तो ये एक बड़ी ग्रोइंग फील्ड है, फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब एक हद तक कि आप इसको आप किस तरीके से यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसी लेवल तक आप इसको लेके जा सकते हैं. तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए ग्रोइंग फील्ड है और पाकिस्तान को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकती है अगर इसमें सही डायरेक्शन में काम किया जाए. Thank you. Miss Elisa Sohail, as a final year student, how was your Bahria life? And do you recommend it? Yes, I would. Okay. So I'm Aliza Suhail. Thank you so much for having me here. I would like to introduce my department. My department not only includes academies, but we also have well-equipped labs, and we also have field visits, which include field visit as well as industrial visits, and we collect data and analyze it further in our well-equipped labs. And if I talk about my journey as a Bahrian, my journey throughout Bahria was very overwhelming, and I felt safe here. So I would definitely recommend students and even females to join Bahria because it's it makes you feel safe. Could you tell more about your field trips, especially towards the northern areas? We have different field visits, जैसे कि related to GIS as well as an environment. When we go there and collect data, which can be like sediments को देखना, sands की study or water quality, and then we analyze and test it further in our labs. So let's talk about labs. I mean clubs and whatever. So have you been able to socialize more due to the resources provided by Bahria University? जब मैं यहाँ आई थी तो I was very introvert, but अब कुछ साल गुजारने के बाद I feel कि बहुत extreme change है मेरे अंदर because of the support center, different opportunities to indulge with people and talk about what you feel. So yep, I feel very confident. We have Amida as well for anyone's mental health if they have any issues. So we have therapists available on campus as well. So that was all for us from today. If anyone has any further queries related to our department or related to any field, everything is available on the Bahria University's website. Other than that, if you have any queries, you can feel free to message us or on our website, and we will be sure to message you as fast as possible. Thank you for being here today, and Allah Hafiz.